Hello guys, hope you all are doing great. I am Apurva. Welcome to my YouTube channel #Lawbuddies. Today we are going to have a look over the topic that is contract of guarantee. So according to section 126 of the Indian Contract Act, it is defined as a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of defaulting party in case he fails to fulfill his promise. So by the definition you can see what is contract of guarantee. तो contract of guarantee एक contractual agreement को रेफर करता है जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को assurance देती है कि if third party is not paying your debt, if he is unable to pay the debt, if he fails, then I will pay it for you, and that's how it is defined as contract of guarantee. So there are three parties which are involved in the contract of guarantee. First, principal debtor, creditor, and surety. तो प्रिंसिपल डेप्टर क्या है? तो प्रिंसिपल डेप्टर एक ऐसी पार्टी है जिसने डेप्ट लिया है और उसे पे करना है, और अगर वो फेल होता है तो उसकी जगह कौन पे करेगा? श्योरिटी पे करेगा. और श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेप्टर, अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गए तो क्रेडिटर कौन है? जिसको श्योरिटी पे करेगा अगर प्रिंसिपल डेप्टर पे नहीं कर पाया तो. ओके, let's take an example where A have taken money from the B, and C is giving guarantee that if A didn't pay the money then he is gonna pay it. ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ए ने पैसे लिए हैं बी से, गारंटी दी है सी ने कि अगर ए ने नहीं भरा तो अगर ए ने पैसे नहीं भरे दिए बी को, लाइक अगर डेप्टर ने पैसे नहीं दिए क्रेडिटर को, देन श्योरिटी विल गिव द मनी टू द क्रेडिटर. इज दैट क्लियर? इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और प्रिंसिपल डेप्ट कंसिडरेशन फॉर गारंटी. और प्रिंसिपल डेप्ट का ऐसा है कि अगर डेप्टर ही नहीं रहेगा तो देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. एंड रही बात कंसिडरेशन फॉर गारंटी की, तो कुछ भी अगर प्रॉमिस मेड हुआ है प्रिंसिपल डेप्टर के बेनिफिट में, तो इट विल बी अ सफिशिएंट कंसिडरेशन श्योरिटी को कि वो फॉर द गिवन गारंटी. Now I think the two essentials are clear. Now let's move towards the surety's liability. So coming towards surety's liability, I have given here the key points. Section 128, liable as same extent, example term of contract. Let's understand what these key points mean. तो जैसे कि मैंने ये की पॉइंट्स में डिवाइड किया है, तो सेक्शन 128 मतलब क्या? तो सेक्शन 128 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है वो क्या कहता है कि जो लायबिलिटी श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो को एक्सटेंसिव है प्रिंसिपल डेप्टर की लायबिलिटी से. सेकेंड इज सेम एक्सटेंट, श्योरिटी इज लायबल एज द सेम एक्सटेंट एज अ प्रिंसिपल डेप्टर. एंड फॉर एग्जाम्पल में अगर अपन ले सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल डेप्टर कुछ हो गया अगर केस में, प्रिंसिपल डेप्टर इज नॉट लायबल टू पे एनीथिंग, तो श्योरिटी को भी कुछ पे नहीं करना पड़ेगा. एंड द फाइनल इज ऑन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में 50,000 दिए तो श्योरिटी को बस 50,000 भरने हैं. ही इज नॉट गोना पे मोर मनी. ओके, so here are so these are the meaning of this key point. Now looking forward toward the comparison between indemnity and guarantee. So first point is definition. So we have to write a definition of guarantee as well as indemnity. Then next is section. So as we know, indemnity is in section 124 is defined in section 124, while guarantee is defined in section 126. Then the purpose of indemnity is to compensate for loss, while the purpose of guarantee is to give assurance to the promise. So in indemnity, liability is primary, while in guarantee liability is secondary and is already exist. And in indemnity there is only one contract, while in guarantee there are three contracts. And thus I think the comparison between indemnity and guarantee are clear to you. Coming over to types of guarantee, there are two types of guarantee: specific guarantee and continuing guarantee. So let's have a look over the definition of specific and continuing guarantee. Coming towards the revocation of guarantee, so revocation of guarantee can be given by notice on date of surety and changes made in terms and condition of contract. We have 3 points in rights of sureties, which is provided under Indian Contract Act: right against principal debtor, right against creditor, and right against the post sureties. You can go towards the detailed explanation of the rights of surety. If you have any queries, feel free to drop your message in the comment box. With this, we have completed a contract of guarantee. Thank you so much, guys. If you have any queries, please drop a message in the comment box, and please don't forget to subscribe our channel.